Yeah. Good evening, all of you. So, this is the fifth day, and you will see two, three things I think you should notice today that how the news continues. And एक जो news है, how the news builds upon it. Every day उसमें क्या addition होते हैं. Every day, whatever news you are reading in the newspaper, उसमें addition कैसे होते जाता है, that you will observe today. And one thing also I have observed in every lecture, that every lecture people are decreasing. That means either they are not reading newspaper daily, right, or they are not able to follow up something like this. But I have seen it is very difficult for people to maintain the consistency maintain करना this exam में सबसे सबसे बड़ा uphill task है. Many people, like many people, they are worried that I am studying the same thing, others are also studying the same thing. Then how exactly we are, I will clear how exactly I am different than others. Those who are consistent, those who are very much like every day, if they are putting that much of effort and that much of energy, definitely you stand to clear this exam, like with much probability as compared to others. So I think, that differentiated. If I talk about myself, I think that was one thing which I was confident about. Like, I don't know about others, but I was confident about that. One thing I'll do is I'll be always ready on the toe. I'll be always consistent. I'll be always, dedicate time for my studies. That was one thing which I was sure about. Okay. So without wasting, and you can see that since last 5 days also, every day I promised you, one day we took a lecture at 11 p.m. in the night. Okay, so I promised you that we'll do this. Okay, yes, tomorrow I am traveling, so tomorrow it won't be possible for me to conduct the lecture. So I'll Saturday and Sunday I'll conduct the lecture on Sunday itself. Okay. So we're starting with the Hindu. Okay, so the Hindu first page. And there is nothing. There is one news that Tamil Nadu governor dismisses one minister from the cabinet. Now, whether governor is allowed to do that, because Council of Ministers suggests one thing and government acts on the behalf of the decision taken by the Council of Ministers. तो ये चीज थोड़ा सा देखने जैसी है. This is the one thing which one should look at. Just a second. सो ओके, सो ये वाला चीज एक बार देख लीजिए. ओके, देन directly come to, there is no other article as such, then you can uh, directly come to editorial page, directly come to editorial page. Directly come to editorial page. Again, see, there is one article related to inflation, spiraling food prices. फूड प्राइसेस बढ़ रही है. ठीक है, तो फूड प्राइसेस बढ़ रही है. ओके, the same thing. Again, there is nothing in the article. You will read that article in 2 minutes, because you have been already reading that article since entire week. Is it true or not? क्या आपने एंटायर वीक में ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रहा है, एलनिनो आ रहा है, एलनिनो की वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्लानिंग, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी quota and all those things they have done. Okay, right? So there is nothing new for you. Then there is between two books, a revolutionary social history, not required, nothing related to our exam. Then ग्रीक रिकवरी, अगेन नथिंग रिक्वायर्ड, लाइक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू, वो ग्रीस के बारे में बोल रहे, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके नीचे का आर्टिकल जो बिलीगड बीइंग अ मुस्लिम इन द न्यू इंडिया, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसमें से सिलेबस के रिलेटेड कुछ भी नहीं है. गो टू द ओपिनियन पेज, हैज द भद्रलोक कल्चर इन बंगाल फेडेड.
again not at all important for your exam. This is, they are talking about Bengal. Then there is this off the cuff, they are talking about the press conference taken by the honorable prime minister in USA, not related to your exam. Within 5 minutes you have completed your all these things. So you need not waste much of your time when you are going through this. You need not waste much of your time. The moment you get to know ki this is not related to exam, go forward. Okay. Then on the next page, mm, there is one article which is like there, India Philippines to explore scope of joint sales petrols to boost defense partnership. There's one article जहाँ पे honorable foreign minister, minister of external affairs, so he is talking, right? So that already India Philippines पे I told you to write one page, तो उसी में ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. But again Philippines से ज़्यादा हम like, you know, I already told you they don't ask a particular country, as long as you know it is big country. Okay, so if they are talking about Philippines, they'll talk about all the East Asian countries. Okay, then moving to next page, there is nothing. Page number 9 पे भी there is nothing. There is nothing on page number 10 also. World news में there is nothing on world news also. Business में, yeah, there is nothing in business also, and sports also. See, I like in like I always think that हिंदू में है ना बहुत ज्यादा कंटेंट कम होता है. सो लाइक द वन हु इज रीडिंग हिंदू, आज का न्यूज़पेपर तो ये 5-10 मिनट में ही पढ़ के हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं है हिंदू के पेपर में आज के. ठीक है, लेट्स गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस. लेट्स सी कि एक्सप्रेस में क्या दिया हुआ है. एक्चुअली ये भी होता है ना कि आपके और मेरे न्यूज़पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है. सो लाइक इफ देयर इज एनी न्यूज अदर देन दिस, यू शुड कवर. ओके, okay, so there is this news on the first page of Indian Express. uh, there is nothing again. All these things again, there is a news related to Tamil Nadu governor only, that is there in the like same Tamil Nadu governor say jo related news hai, which is there in Indian Express also. Second page पे all the news are continuing. अभी मेरे पास जो थर्ड पेज है, इट इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, इट मे बी डिफरेंट इन योर केस. Come to the page where there is government and politics. Government and politics, it may be, must be page number 5 in your case. Okay, again, is there no, there is nothing, no news. Okay, Express network, there is nothing. Come directly to the page of editorial page. Come to the editorial page. Changing the game. First is changing the game. It is related to National Research Foundation. National Research Foundation. अभी yesterday only we read कि NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए इतना फंड दिया गया है which will promote the research. अभी इसमें एक्सप्लेन में एक आर्टिकल है which is a good article today. I think that is a very good article जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर है. That article again write one page because it is related to your GS2 syllabus. It is related to your GS2 syllabus. Okay, GS2 के सिलेबस से रिलेटेड है. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. देन क्राई फॉर हेल्प मिजोरम. अभी क्या हुआ है मणिपुर में जो इशू चल रहा है, तो मेनी पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम मणिपुर टू मिजोरम. ओके, मणिपुर टू मिजोरम में आ रहे हैं. तो is there like how center can help? And you need to talk about this, that how migration, when we talk about migration, this is the forced migration topic is there. जब हम population की बात करते हैं, population is there in GS1 के Indian society के topic में is there. So migration actually comes under GS1 Indian society portion. Okay,
देन द यूनिफॉर्म सिविल कोड मूवमेंट यूसीसी, ये पूरा हफ्ता भर यही चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा हफ्ता भर यही चल रहा है। देयर इज नथिंग न्यू टू ऐड हियर, नथिंग न्यू टू ऐड हियर, देयर इज नो न्यू आर्ग्यूमेंट एज सच। इफ यू गो थ्रू आर्टिकल, वही आपको वही दिखेगा। बट लाइक आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग दिस, कि द मोमेंट यू कवर वन टॉपिक होलिस्टिकली, बाद में उसको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता। इज दिस ट्रू फॉर यू? Like I just found out that कि the moment you read this, the moment you read दो तीन दिन का अच्छे से, एवरी डे बस न्यूज, वही न्यूज आती रहती है, वही न्यूज आती रहती है बस। डिफरेंट पीपल लाइक गिव देयर डिफरेंट ओपिनियंस। बस हमारे लिए हमें देखना है कि न्यूट्रल ओपिनियंस क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। इफ यू मेक प्रॉपरली, और उसका बस अगर ये करते हैं तो बस उसके बाद कुछ नहीं है। Then there is no high table for women, again not required as such। ऐसे में काम आ सकता है थोड़ा सा, but again if you write something now it won't help you because you may not come back and read it again। Okay, then fighting fire with fire, not essential। Like former president Obama said something about our honorable prime minister, and वो जो political war चला, again it is not important for the exam perspective। ठीक है। Then there is another article on uniform civil code। The same person, Mr. Gaurav Bhatia, wrote the article in Hindu also. Do you remember? I think yesterday or the day before, we talked about this. He wrote the same article in the Hindu. Same article is there in now in Indian Express. Okay, so again, you need not worry about it। Then Adi Purush and epic mistake। Okay, आदि पुरुष का हमारे एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन्ड पेज इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन पेज में एवरीडे जो एक्सप्लेन पेज रहता है उसमें बहुत अच्छा कुछ रहता ही है, ठीक है। हाउ एनआरएफ एम्स टू बूस्ट रिसर्च इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हाउ एनआरएफ एम्स टू बूस्ट रिसर्च इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो देखिए एनआरएफ होता क्या है, राइट। एनआरएफ होता क्या है, एनआरएफ का क्या क्या है, जैसे बोला कि एनआरएफ इज इंपॉर्टेंट, नाउ यू शुड राइट 1 or 2 पेज ऑन दिस, ठीक है। देर इज अनदर दिस इंडिया एंड द चिप्स वॉर। तो इट इज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, जो हमारे हमने यूएस के साथ ये किया है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू योर सेमीकंडक्टर। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव। तो इस पे थोड़ा सा देख लीजिए, जस्ट लुक एट दिस। ओके, ये यू कैन just look at। okay, actually link your pan and Aadhaar today from economics, थोड़ा सा देख लीजिए prelims point of view से। okay, from prelims point of view you can look at that। there is, I don't think there is anything further than this। there is nothing। okay, pan and Aadhaar का भी देख लीजिए। I think that's all from both the newspapers today। ज्यादा कुछ है नहीं आज। okay, so all those people who are following this, it's easy for you कि थोड़ा सा रेगुलरली करिए न्यूज़पेपर। जितना आप रेगुलरली पढ़ेंगे उस उतना आपको कम टाइम लगेगा। द मोमेंट यू फिनिश दिस, देन यू कैन सॉल्व द क्विज व्हाटएवर यू आई थिंक डे में आप 1 से 1.5 घंटा यू कैन dedicate for current affairs। 1 to 1.5, 1.5 hour you can dedicate for current affairs। अगर न्यूज़पेपर जल्दी हो रहा है then you can dedicate that time to solve the quiz। something like that you should do so that your current affairs is diverse, current affairs is diverse। okay, so actually this I wanted to do since long time कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या होता है। तो ये वाली चीजें जो है आपको अगर समझ आ जाए तो आपका बहुत कम टाइम में यू कैन कवर, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू यू। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने लाइक they were there yesterday also in the lecture of the mentorship। I hope all of you are there, and of course they are wonderful people and they'll be helping you in your preparation। so all the best to you, and good night, take care। anybody who has doubt related to that they can text, ठीक है। good night, good night, take care।